Hello everybody, I hope I am audible to you. Hello everybody, I hope I am audible to you. Hello everybody, I hope I am audible to you. Hello everybody, I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we will discuss antihypertensive drugs. Yesterday we have seen the drugs used in the cardiac arrhythmia and we have completed that chapter. So today we will see drugs used in the hypertension or drugs used in the blood pressure. So again, it is a very important chapter, and let me know once if I am audible to you. If I am audible to you, please write yes in the comment box so that I can understand and I will start. ठीक है, साउंड आ रहा है आपको प्रॉपरली, ऐसी आशा करता हूँ. एंड आज देखेंगे ब्लड प्रेशर, ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. So we are discussing the pharmacology of drug acting on cardiovascular system, and we have already completed our antiarrhythmic drugs or drug treatment of cardiac arrhythmia we have seen. So today we will see antihypertensive drugs or drug treatment of blood pressure. Antihypertensive drugs or drug treatment of blood pressure, right? So what is blood pressure? First of all, blood pressure is nothing but it is a pressure exerted by blood on the wall of blood vessels. What is the blood pressure? What is the blood pressure? Blood pressure is nothing but it is a pressure exerted by blood on the wall of arteries, on the wall of artery. So it is known as a blood pressure, and normally it is a 120/80. कितना होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मली? 120/80. Normal blood pressure is around 120/80. What is 120? 120 is a systolic blood pressure and 80 is a diastolic blood pressure. So blood pressure is nothing but the pressure exerted by blood on the wall of aorta or arteries, known as a blood pressure. So it may vary, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है हर इंडिविजुअल में. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, बट नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80. 120 इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. कितना होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मली? 120/80. So 120 is a systolic blood pressure, right? And 80 is nothing but the diastolic blood pressure. Right? 120/80. So 120 is a systolic blood pressure and it is a diastolic blood pressure. Now how there is a control of blood pressure? Blood pressure is controlled by 3-4 mechanisms. तो आपको mechanisms important है, याद रखना है. There are 3-4 mechanisms to control the blood pressure, right? Blood pressure control करने के mechanisms कौन से है? via your baroreceptor. So baroreceptor mediated reflex are there. Baroreceptor mediated reflex. Chemoreceptor mediated reflex. Okay, baroreceptor and chemoreceptor mediated reflex. So they are known as a short term regulation of blood pressure. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इफ योर ब्लड प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका,
तो बॉडी विल ट्राई टू करेक्ट इट, बॉडी खुद से ही अपना ब्लड प्रेशर कम करने का ट्राई करेगी। कैसे करेगी? तो एज देयर इज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, so this baroreceptor also known as a stretch receptor, they get stimulation. Stimulation of baroreceptor, increase the blood pressure leads to stimulation of baroreceptor, and baroreceptor will send an impulse to the nerve impulse to the brain को nerve impulse भेजता है कौन? baroreceptor. Baro मतलब क्या? Baro is related with the pressure, so it is known as the pressure sensitive receptor. So baroreceptor is known as a, or baroreceptors are known as a pressure sensitive receptor, right? So baroreceptor stimulate the brain, send the signal to the brain via cranial nerves 9 and 10. तो जैसे ही आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तो बॉडी आपका कम करती है। कैसे करती है? जैसे प्रेशर बढ़ेगा बैरोरिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा, बैरोरिसेप्टर सिग्नल देगा ब्रेन को वाया 9 एंड 10th क्रेनियल नर्व। तो ब्रेन में न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरिस, तो this area will receive the signal from baroreceptor. Now that results in the stimulation of vasodilatory area. तो ट्रैक्टस सोलिटरिस क्या करेगा? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरिस ऑफ ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन है। इट इज अ एरिया इन द ब्रेन, ब्रेन का ये एरिया है। तो ये एनालाइज करेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ये कम करने के लिए क्या करेगा? सो इट विल स्टिमुलेट द वैसोडाइलेटरी एरिया, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला एरिया स्टिमुलेट होगा, एंड दैट इंक्रीजेस द वेगल टोन, आपका एसिटिलकोलिन ज़्यादा रिलीज होगा, एंड एसिटिलकोलिन डिक्रीजेस द एसिटिलकोलिन डिप्रेसेस योर हार्ट, कॉजेस द डिक्रीज इन द heart rate and force of contraction, so bradycardia, and also decreases the blood vessel diameter, means dilate the blood vessel, right? जैसे टैकीकार्डिया कब होता है, मतलब इंक्रीज हार्ट रेट कब होता है? तो इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द वेनस रिटर्न, जो आपका वेन है, वेन सुपीरियर इंफीरियर का वेन, दे विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। इफ देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, so venous return will increase the venous return will cause stretching at the receptor of a right atrium, and that impulse is carried again through afferent impulse through a inferior cervical sympathetic nerve, and that causes the inhibition of vasodilatory area, that is in the decrease in the vagal tone, means acetylcholine, and there is a tachycardia. So first reflex is known as a Mary reflex or cardio inhibitory reflex. Second reflex is known as a brain bridge or cardio accelerator or cardio stimulatory reflex. So we have already seen this. Now remember, whole blood pressure chapter is based upon, good evening, whole blood pressure chapter is based upon this formula. तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली आपको क्लियर कट आइडिया दूंगा। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर exerted by a blood on the wall of artery. What is it? Around 120/80. नॉर्मल कितना होता है? 120/80. 120/, तो ब्लड प्रेशर इज 120/80 नॉर्मल। या ये थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। so exactly it is not a 120/80, but it may be around 120/80, 130/80, that is a normal. Again 140/80, it is also considered as a normal, but beyond that it is considered as a pre-hypertension. Okay, so 120/80 is a normal. So if blood pressure is more than normal, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, if blood pressure is more than normal, it is known as a hypertension. It is known as a hypertension. Blood pressure more than normal, hypertension. Blood pressure less than normal, hypotension. अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया, तो if blood pressure is increased, then normal hypertension, and if it is decreased, if blood pressure is decreased, then normal known as a hypotension. Hypotension, right?
नाउ ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना है आपको, ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स. ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, क्या है ये, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ब्लड प्रेशर किसका प्रोडक्ट है भाई, ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है. तो ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय कार्डियक आउटपुट 1 एंड सेकंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस. मींस यहाँ पे देखो, ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, बट कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज इटसेल्फ, कार्डियक आउटपुट इज अ, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज अ कार्डियक आउटपुट. सपोज स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया आपका, so if there is increase in the stroke volume, so cardiac output will increase, and if cardiac output is increased, then the blood pressure will increase. Suppose if your heart rate is increased, तो heart rate increase हो गया तो cardiac output increase होगा, cardiac output increase होगा, blood pressure increase होगा, right? So stroke volume, और simply आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो blood volume, तो volume of blood, तो blood volume कम हो गया, cardiac output कम हो जाएगा, blood pressure कम हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. हार्ट रेट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. हार्ट रेट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट. सो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. कार्डियक आउटपुट itself is a product of stroke volume into heart rate, right? Now peripheral resistance means what? It is a resistance offered by the small blood vessels like arterioles. जो arterioles होते हैं small blood vessels, so they create a resistance to the blood known as a peripheral resistance. अभी peripheral resistance का एक फंडा है देखो. तो if blood vessel is constricted, अगर blood vessel का contraction हो गया, if blood vessels are constricted, that increases the peripheral resistance. If blood vessel is dilated, जैसे मान लीजिए आप ये blood vessel dilated, so if there is a dilation of blood vessel, that decreases the peripheral resistance. Constriction of blood vessel increases the peripheral resistance. Dilation of blood vessel decreases the peripheral resistance. So blood vessel lumen is also controlled by various chemicals. मतलब adrenaline, acetylcholine, so noradrenaline, acetylcholine, dopamine, they also control the lumen of blood vessel. Now है ना, if there is a vasoconstriction, if there is a arteriolar constriction, so increases the peripheral resistance, which ultimately increases the blood pressure. मतलब अगर किसी भी रीजन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. किसी भी रीजन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा. मतलब ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फैक्टर आइदर कार्डियक आउटपुट को कम ज्यादा कर रहा है या फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहा है. सो ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सो एनीथिंग दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट will increase or decrease the blood pressure respectively, or any factor that increases the peripheral resistance or decreases the peripheral resistance, that will also increase or decrease the BP respectively. So this is the formula, and based upon this whole chapter is there, right? I hope you got it. Blood pressure क्या है भाई? Blood pressure is a product of cardiac output into peripheral resistance. Anything that will increase the cardiac output. Now cardiac output can be increased by either increasing the stroke volume or simply blood volume. Blood volume increase हो गया, stroke volume increase होगा, cardiac output increase होगा, blood pressure increase होगा. अगर heart rate increase हो गया, cardiac output increase होगा, blood pressure increase होगा, right? है ना, ये दोनों ही decrease हो गए तो cardiac output decrease होगा, blood pressure decrease होगा. Anything that will increase the cardiac output will increase the blood pressure. Anything that will decrease the cardiac output will decrease the blood pressure. Anything that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure. Anything that will decrease the peripheral resistance will decrease the blood pressure, right? Now suppose there is an increase in the blood volume. Increase in the blood volume है ना, blood volume increase हो गया तो venous return भी increase होता है. मतलब blood volume increase हो गया तो हार्ट में blood जो आने वाला है
वो भी इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन द राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, तो राइट वेंट्रिकल भी फिल ज़्यादा होता है. दैट इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट एंड लास्टली दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. दैट्स हाउ, है ना. इफेक्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड वेनेस्टन ऑन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. तो यू माइट नो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा क्यों होता है. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर ब्लड प्रेशर, रीजंस ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना. क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, reasons for blood pressure. There are different reasons for blood pressure. There are different reasons for blood pressure. For example, जैसे if there is any kidney disease, तो किडनी में कोई प्रॉब्लम है आपका, किडनी डिसीज, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा. If there is any problem in the blood vessel, तो ब्लड वेसल जो है आपका वेसल, ब्लड वेसल में कोई इशू है, that will increase or decrease the blood pressure. तीसरा क्या है, थर्ड रीजन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थर्ड रीजन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पे याद रखना है आपका, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय, और ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स कौन से है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर ब्लड प्रेशर. तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द किडनी डिसीज. If there is a disease in the kidney like glomerulonephritis, stenosis of kidney, so that will increase the blood pressure. If there is a blood vessel problem, मतलब क्या, normally blood vessel is elastic in nature. If there is a loss of elasticity, so that also increases the blood pressure. Overactivation of sympathetic nervous system increases the blood pressure, है ना. So here blood vessel, है ना, blood vessel elasticity is lost by sodium. अगर सोडियम ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में, तो सोडियम इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ ब्लड वेसल. सोडियम कॉजेज द हार्डनेस ऑफ ब्लड वेसल. दैट्स व्हाई अगेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, राइट. So these are the some important reasons. Another reasons are there, lot of reasons are there. Stress is there. अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको, है ना, स्ट्रेस इज देयर, है ना. एज इज देयर, एज, स्ट्रेस, एज, है ना, मेल फीमेल मतलब सेक्स, देन डिसीज, टेम्परेचर, एनी इन्फेक्शन इज देयर, राइट, एनी जेनेटिक डिसीज देयर, हार्मोन्स आर देयर. So there are different reasons for blood pressure, but main reason क्या है, if there is a problem in the kidney, किडनी में कोई दिक्कत है आपको, if there is a problem in the blood vessel, then if there is a increase the sympathetic activity, these are the main reasons for blood pressure, है ना. So reasons for blood pressure. So once you know the reasons for blood pressure, अगर आपको reason मालूम है, अगर आपको how there is a blood control of blood pressure in the body, अगर blood pressure body में control कैसे होता है, if there is increased blood pressure than normal, if there is decreased blood pressure than normal, how your body will compensate that. अगर आपको ये मालूम है, in short, if you know the reasons for blood pressure, in short, if you know the reasons for blood pressure, if you know the regulation of blood pressure in the body, these two things, if you know, you can understand everything, mechanism of drug action, classification and all that, right. So I have told you the reasons, again I will tell you the reasons. What are the reasons for blood pressure? पहला रीजन होता है आपका, if there is any issue in the kidney, अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो किडनी डिसीज, किडनी डिसीज, किडनी डिसीज, देन ब्लड वेसल डिसीज. one reason kidney disease, second blood vessel disease, third reason overactivation of sympathetic nervous system, overactivation of sympathetic nervous system. Fourth reason is nothing but the stress, you know, stress. Fifth reason age. Sixth reason ऐसा बहुत सारे reason हो सकते हैं, secondary reasons are there, but main reasons are nothing but the kidney, blood vessel and sympathetic nervous system. Remember, okay? Now how there is a regulation of blood pressure in the body, once you understand this, you can understand whole chapter. So regulation of blood pressure in the body, 120/80 क्या है आपका नॉर्मली, 120/80, 120/80. 120/80 is a
normally average blood pressure. Now if there is increased hypertension, decreased hypotension, right? Now how it is regulated? So blood pressure regulate कैसे होता है body में? So there are four mechanism for regulation of blood pressure. देखो पहला mechanism है nervous mechanism. First mechanism is a nervous mechanism, or you can also say central mechanism. So first mechanism is nervous mechanism. Suppose आपका blood pressure कम हो गया, what will happen? The message is sent to brain and by to the vasomotor center in the brain. Now what will अगर आपका blood pressure कम हो गया, if there is a decreased blood pressure, right? So baroreceptor will send signal to a brain to a vasomotor center, and what happens? There is a release of noradrenaline. So there is a activation of sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system activate होगा, noradrenaline release होगा. Noradrenaline क्या करेगा? It will come to the blood vessel, it will constrict the blood vessel, it will come to the heart, it will increase the force of contraction and heart rate. So at one side, noradrenaline will increase the peripheral resistance by constricting the blood vessel. At another side, it will stimulate the heart and increase the cardiac output. तो ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ऐसे इंक्रीज होता है ना. मान लीजिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, इफ देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, मान लीजिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है, what will happen? So again baroreceptor will send signal to vasomotor center, and but here there is a decrease in the release of sympathetic nervous system. Sympathetic outflow कम होगा, so right? तो ये ब्लड प्रेशर कम है तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, राइट? सो राइट, देन सेकंड मैकेनिज्म इज नोन एज renal mechanism. Second mechanism is known as a renal mechanism. Now first mechanism is for short term regulation of blood pressure. Short term regulation of blood pressure, yeah, short term. Now renal mechanism is for long term regulation of blood pressure. Renal mechanism कैसे? Renal mechanism will regulate the blood volume. It will regulate the volume of blood. How? It regulates the extracellular fluid volume and blood volume by renin, angiotensin, aldosterone mechanism, activation of RAS, right? So it is a long-term control of blood pressure. Then third mechanism is nothing but the hormonal mechanism. जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन वगैरह और वेरियस vasoconstricting हार्मोन, वेरियस vasodilating हार्मोन. नाउ फोर्थ मैकेनिज्म इज लोकल मैकेनिज्म. इट एक्ट लोकली एट अ ब्लड वेसल. यहाँ पे क्या होगा? ब्लड वेसल में ही आपके लोकल हार्मोन्स रिलीज हो गए, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड वैसोडाइलेटर. तो वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन है भाई? वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन है? थ्रोम्बोक्सेन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन. वैसोडाइलेटर कौन है आपका? वैसोडाइलेटर होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और also known as EDRF, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर. इसको अपन बोलते हैं EDRF. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. व्हाट इज EDRF? है ना, EDRF. ED मतलब क्या? एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, है ना. EDRF मतलब क्या? एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर. EDRF मतलब क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड. तो इट इज अ लोकल वैसोडाइलेटर इन द ब्लड वेसल. अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन, PG, है ना. आपको प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? अगेन ब्लड वेसल को डायलेट करता है, PG. लोकल मैकेनिज्म, राइट? सो यू नो दैट ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, है ना. कुछ लोग इसको बोलते हैं PVR, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. कुछ लोग इसको बोलते हैं TPR. कुछ ऑथर्स, कुछ ऑथर्स, है ना. TPR मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सम ऑथर्स विल कॉल एज सिंपली पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सम विल कॉल इट एज अ PVR, है ना. कुछ ऑथर्स सिर्फ उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलेंगे, कुछ बोलेंगे पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, कुछ बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ठीक है.
Now that is a mechanism of controlling of blood pressure. Once you understand this, once you understand the reasons for blood pressure, you can easily understand the drugs used in the blood pressure. ठीक है ना, देखो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म. ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल, इफ योर ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन नॉर्मल, so that causes stimulation of baroreceptor. Baroreceptor will send a signal to a brain via cranial nerve 9 and 10. Now brain, in the brain you have cardiovascular center, that is a nucleus tractus solitarius. Now what it will do, it will inhibit the vasoconstrictor area. तो vasoconstrictor area का काम क्या होता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, इनिबिशन ऑफ vasoconstrictor area, मतलब that causes the vasodilation, decrease in the vasomotor tone, that means decrease in the peripheral resistance, decrease in the peripheral resistance, and decrease in the peripheral resistance means what, decrease in the blood pressure to the normal. Again at the another end, this nucleus tractus solitarius will do stimulation of vasodilator area, and there is increase in the vagal tone, and that result in the bradycardia and decreased cardiac output, that means decrease the blood pressure. That is how baroreceptor will regulate the blood pressure if there is increase the blood pressure. अगर decrease होता है तो उसके opposite, decrease अगर blood pressure होता है, if there is a decreased in the blood pressure, जैसे मान लीजिए decrease हो गया तो क्या करेगा, so if there is a decreased in the blood pressure, decrease हो गया तो again baroreceptor will be stimulated, again impulse will go to the nucleus tractus solitarius, but यहाँ पे क्या होगा, this will stimulate the vasoconstrictor area, which will increase the peripheral resistance, lastly increase the blood pressure, and at the other end it will increase the outflow of sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system का outflow बढ़ा देगा, नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा, वहाँ पे नॉर एड्रेनालिन हार्ट में जाके बीटा 1 रिसेप्टर के एक्ट होके हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट. तो दिस इज द मैकेनिज्म, राइट. तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. सपोज आप जंगल में हो, इफ यू आर इन अ जंगल एंड सडनली देयर इज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ यू, सो व्हाट विल हैपन, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन टू यू, बट वी विल ट्राई टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स ओनली. ठीक है, तो जब आप जंगल में हो, आपके सामने सडनली टाइगर आता है, तो क्या होता है, आपका दिल क्या होता है, जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक करने लगा, मोरा जियारा डरने लगा, तो योर हार्ट विल बीट फास्टर, so will increase the heart rate because of the threat noradrenaline. So as soon as you see a tiger, your sympathetic nervous system is activated, and there is a release of noradrenaline. Noradrenaline will come, will act on a beta 1 receptor of your heart, will increase the heart rate, force of contraction, and ultimately cardiac output, and ultimately blood pressure. But again noradrenaline will act on a alpha receptor on a blood vessel, will increase the peripheral resistance by constricting the blood vessel, ultimately blood pressure will increase. तो जब आपके सामने टाइगर आता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, नॉर्मल है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. पर जब टाइगर चला जाएगा, जब आप घर पे आओगे तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ता है कि नहीं, तो नॉर्मल हो जाता है, राइट. सो व्हेन देयर इज अ थ्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, योर ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज. व्हेन थ्रेट इज no more, so your blood pressure will come to the normal. This is a normal thing, right? But now what happens, due to continuous stress, due to continuous ambitions, over enthusiasm, targets, है ना, फास्ट लाइफ, है ना, ये सब हो रहा है यार. जब मान लीजिए आपने फील्ड में एग्जांपल, सो कोई अगर एमआर है, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसको टारगेट्स दिए रहते हैं कि इतना सेल कंपनी का होना चाहिए मंथ में, राइट. तो उसको टारगेट देते, तो जैसे ही उसके मैनेजर का फोन आता है तो वो बंदे का, वो एमआर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. क्यों? बिकॉज वो मैनेजर उसको बोलता है कि नहीं, सेल बढ़ना पड़ता है, कुछ भी कर सेल ला. दैट मीन्स व्हाट, जैसे मान लीजिए आप दो लोग हैं, एक में के दुश्मन है ना, बाहर है, जब सामने आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनका. क्यों? क्योंकि माइंड में चलता है ना, यार इसको ऐसे मारो कि वो ऐसे मारो, वैसे मारो को वैसे मारो, मतलब your jealousy, your hatred, your ambitions, your enthusiasm, your revenge, you know, thought of revenge. So that
continuously stimulate your brain to release the noradrenaline, and that noradrenaline increases your blood pressure by acting on a blood vessel, by acting on a heart, and by acting on a kidney. Okay, right? So by acting on a blood vessel means there is a alpha receptor on the blood vessel. आपको मालूम है, we have already seen the adrenergic nervous system. So there is a alpha receptor, alpha 1 receptor on the blood vessel, which stimulation of alpha 1 receptor by noradrenaline causes the contraction of blood vessel or constriction of blood vessel, right? Also there is a alpha 2 receptor on blood vessel which causes the vasodilation. There is also beta 2 receptor which also causes the vasodilation, right? Now beta 1 receptor, adrenergic beta 1 receptor is present in beta 1 receptor कहाँ पे होता है? Beta 1 is present in the heart. Beta 1 receptor is present in the heart. It is also present in the heart and kidney. Beta 1 receptor कहाँ पे होता है? Heart and kidney. So in the heart, stimulation of beta 1 receptor by noradrenaline will increase the blood pressure, will increase the heart rate, will increase the cardiac output, and lastly will increase the blood pressure, right? And this beta 1 receptor stimulation in the kidney, जैसे किडनी में blood जैसे beta 1 receptor stimulation in kidney causes the release of renin, release of this renin, right? So renin बाद में क्या क्या होता है अपन देखेंगे. Now third mechanism for control of blood pressure is nothing but the renal mechanism or RAS, known as the RAS, renin angiotensin aldosterone system. Renin angiotensin aldosterone RA, renin angiotensin aldosterone system, RAS. RAS. Now how, if there is a decrease in the blood pressure, अगर blood pressure कम हो गया, so if there is a decrease in the blood pressure in your body, तो kidney को blood कम जाएगा, so decreased blood pressure in the body will, okay, there will be less blood will go to the kidney. So if there is a less blood, है ना, decrease in the blood pressure or less blood to the kidney stimulates kidney cell, stimulate one type of cell in the kidney known as the juxtaglomerular cells, or apparatus. Decrease in the blood pressure to the kidney stimulate juxtaglomerular apparatus to release one enzyme, known as the renin, इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 बार. So, renin is a enzyme produced by juxtaglomerular cells of kidney, juxtaglomerular cells of kidney. Renin is a proteolytic enzyme produced by juxtaglomerular cells or juxtaglomerular apparatus of kidney. इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन मिल चुका, ठीक है. So what is renin? Renin क्या है? It is a proteolytic enzyme. ये क्या है? Proteolytic enzyme. Proteolytic मतलब क्या है? प्रोटियो मतलब क्या है? प्रोटीन. लाइटिक मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करने वाला. तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. इट विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन, बट विच प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, तो आएगा आपको. तो इन द लिवर विल synthesize one protein known as a angiotensinogen. Liver will synthesize one protein known as angiotensinogen. This is the inactive glycopeptide in the plasma. एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव ग्लाइकोपेप्टाइड होता है प्लाज्मा में. जैसे ये किडनी से रेनिन रिलीज होगा, रेनिन क्या करेगा? ये प्लाज्मा में, सो रेनिन विल कन्वर्ट दिस प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1. So angiotensin 1, right? Angiotensin 1. So angiotensin 1. So it is a decapeptide. याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. डेकापेप्टाइड मतलब क्या है? 10 पेप्टाइड बॉन्ड. So it is a decapeptide. Now angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. Angiotensin 1 converted into angiotensin 2, which is a octapeptide. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Which is a octapeptide, 8 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, by the enzyme ACE. ACE मतलब क्या? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम.
by the enzyme ACE. Okay? By the enzyme ACE. Now angiotensin 2 is converted into angiotensin 3 by the enzyme angiotensinase. Angiotensin 3 is a heptapeptide. Remember, angiotensin 3 is a heptapeptide 7. ठीक है, बाद में angiotensin 4 को भी होता है कन्वर्ट. सो angiotensin 3 का कन्वर्जन बाद में 4 में होता है. बट हियर angiotensin 2nd and angiotensin 3rd, these two are the very important, because what will it do? Angiotensin 2nd and 3rd, they are known as a vasoconstrictor. ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं. So if there is a constriction of blood vessel, means that what happens? There is a increased peripheral resistance. Increased peripheral resistance. So if there is vasoconstriction, increase the peripheral resistance. So this angiotensin 2nd, angiotensin 3rd, they are the powerful vasoconstrictor which causes the constriction of blood vessel, and because of that there is increased peripheral resistance. Increased peripheral resistance हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? You know that blood pressure will increase at the one end. तो ये angiotensin 2nd, angiotensin 3, ये दो बदमाश क्या करते हैं? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं. दूसरी तरफ क्या करते हैं? So angiotensin 2nd, 3rd, they are also stimulate the adrenal cortex. They will also stimulate the adrenal cortex. एड्रेनल ग्लैंड का जो आउटर एरिया होता है उसको बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स causes the release of aldosterone. What is aldosterone? It is an anti-diuretic hormone. क्या है? Anti-diuretic hormone. So release of aldosterone causes the reabsorption of water and sodium. सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है. सोडियम वाटर रिटेंशन होता है मतलब सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होने देता. मतलब क्या कि बॉडी के वाटर एंड सॉल्ट अंदर ही रहता है, बाहर जाता नहीं. यूरिनेशन नहीं होगा. तो देर इज इंक्रीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्या? तो देर इज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम. एंड आपको मालूम है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. राइट. तो दिस इज नॉर्मली होता है. नाउ आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है ना? ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है आपका? बिकॉज ऑफ द नॉर एड्रेनालिन, बिकॉज ऑफ द रास सिस्टम, है ना. ये इसके कारण आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना. तो आपको स्टॉप करना है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है आपको मालूम है? क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे? इन अ सिंपल सेंस आई विल एक्सप्लेन अगेन, है ना. सपोज यू आर इन अ जंगल, देयर इज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ यू. टाइगर को जैसे देखते हो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड. सो देयर इज अ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन इन द ब्रेन. नॉरएड्रेनालिन सिंथेसाइज होगा, स्टोर होगा, रिलीज होगा. ठीक है, इन द ब्रेन में वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा. वहां से आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, आपके नर्व के थ्रू आएगा. स्पाइनल कॉर्ड के बाहर क्या है? देयर इज अ गैंग्लिया, राइट. गैंग्लिया के बाद में आपको एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में आएगा, और न्यूरॉन से इफेक्टर सेल के ऊपर आएगा. इफेक्टर सेल क्या है आपका? ब्लड वेसल एंड हार्ट एंड किडनी. ब्लड वेसल में आएगा, अल्फा रिसेप्टर अल्फा 1 को स्टिमुलेट करके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. ठीक है. बीटा 1 को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. और बीटा 1 को किडनी में स्टिमुलेट करके रास को एक्टिवेट करके वहां से भी फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. राइट. तो ये हो गया. नाउ आपको क्या करना है? यू हैव टू ब्लॉक एट अ स्टेप बाय स्टेप. तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इतना ईजी है, बहुत ईजी है ना. आपको ईजी करवा के दूंगा मैं. ठीक है. तो बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लड प्रेशर. सो देयर आर है ना, सो देयर आर प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन. इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन, राइट. तो बट हाइपरटेंशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. तो प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब क्या है? प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन. जीपैट 2023, GPAT 2023 question was there. Primary or essential hypertension. Because increase in the blood pressure is due to the definite cause. There is a reason for the
ब्लड प्रेशर। तो प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर। प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, व्हेन increase in the blood pressure or rise in the blood pressure is due to the definite cause. There is a cause but it is unknown. कुछ ना कुछ कारण है इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, बट वो समझ में नहीं आ रहा है, अननोन है। इट इज नोन एज द प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, है ना। इट इज नोन एज द प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, है ना। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब क्या है, primary is because of the some cause but which is unknown. Now secondary is a secondary hypertension is because of the secondary reason. Secondary reason कौन सा है, it is a secondary to renal, जैसे किडनी में कोई दिक्कत है, जैसे chronic diffuse glomerulonephritis, मतलब आपका ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन हो गया है, glomerulonephritis, because of that also hypertension is poly, है ना, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोरिक नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी, है ना। जैसे आपके प्रेमानंद महाराज है ना, प्रेमानंद महाराज आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, प्रेमानंद महाराज तो प्रवचन फिर उनको क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी, राइट। देन इट इज ऑल्सो ड्यू टू एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस लाइक कुशिंग सिंड्रोम, थियोक्रोमोसाइटोमा, प्राइमरी हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म or any blood vessel issue, renal artery disease or contraction of aorta, है ना। अगर इनके कारण ब्लड प्रेशर है तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, देयर इज सम रीजन बट द रीजन इज अननोन, सो प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। व्हेन रीजन इज नोन, सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे रीनल, है ना, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन, राइट। नाउ माइल्ड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, माइल्ड हाइपरटेंशन क्या आता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 104, है ना। आपको नॉर्मल कितना होता है, 120/80, 120/80। व्हाट इज 120, 120 इज अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज अ 80, इट इज अ सिस्टोलिक, इट इज डायस्टोलिक। मोर एक्यूरेट मेजर टू, है ना, मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बड़ा है उसके बेसिस पे ज़्यादा मेजर होता है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन में इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अप टू 104, ये 80 के बजाय 104 हो रहा है, तो है ना, माइल्ड हाइपरटेंशन। मॉडरेट हाइपरटेंशन क्या है, मॉडरेट हाइपरटेंशन, है ना, अगर ये 105, है ना, 105 to 114, तो 80 की जगह 114 हो गया, तो दैट इज अ मॉडरेट हाइपरटेंशन। देन सीवियर हाइपरटेंशन मींस इफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 150, सीवियर हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर चार्ट भी यहाँ पे दिया है मैंने, ब्लड प्रेशर चार्ट, तो राइट। तो व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल पे, है ना, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अ 120, 80 to 120 mm of Hg, and डायस्टोलिक इज 60 to 80 mm of Hg, दैट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल है ना। mm of Hg मतलब क्या, मर्क्यूरी मिलीमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पेग्मोमैनोमीटर, आपको मालूम होगा 12th में होगा, स्पेग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू measure the blood pressure, right? Now decrease in the blood pressure then normal known as a hypotension or low blood pressure. Hypotension कब होगा, when systolic blood pressure is less than 80 and diastolic is less than 60, known as a hypotension. Now pre-hypertension, hypertension मतलब क्या, hypertension मतलब क्या, increase in the blood pressure, hypertension मतलब क्या, increase in the blood pressure. Now pre-hypertension, so when systolic blood pressure will go up to 140, जैसे 149, 139 है ना, so 140 लिखो है ना, नियर अबाउट। तो systolic blood pressure when there is a 140 systolic blood pressure, diastolic is a 90, diastolic is a 90. When pre-hypertension is there, मतलब पूरा hypertension नहीं, अभी pre-hypertension है। When systolic blood pressure is a 140 and diastolic is a 90, so it is known as a pre-hypertension. Now hypertension stage 1 मतलब क्या, तो if your blood pressure is around 160/100, 160/100,
systolic 160 and diastolic 100. अगर सिस्टोलिक है आपको 160, डायस्टोलिक 100, नोन एज अ हाइपरटेंशन स्टेज 1. ठीक है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 मतलब क्या है? सिस्टोलिक इज मोर देन 160 एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 100. वेरी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब क्या है? तो व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अराउंड 180, है ना, एंड डायस्टोलिक इज अराउंड 110, known as a hypertensive crisis. ये बहुत ज़्यादा and immediate treatment is required over it. Treatment is required from this hypertension stage 1. यहाँ से लेकर hypertension stage 1 और यहाँ तक ट्रीटमेंट लगता है. Hypertension stage 1, stage 2 very, है ना, treatment is required. Now, है ना, देखो, if there is a decrease in the blood pressure, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया नॉर्मल से, if there is a decrease in the blood pressure, तो baroreceptor will be stimulated and sympathetic nervous system will be activated. So there is a release of noradrenaline, तो noradrenaline रिलीज होगा. यहाँ से noradrenaline रिलीज होगा क्या, कहाँ पे? इन द ब्रेन. noradrenaline, है ना, stimulation of vasomotor center by baroreceptor, okay, increase the parasympathetic activity at a preganglionic neuron, increase the sympathetic activity at a ganglionic neuron, and then, है ना, noradrenaline will be released in a, यहाँ पे noradrenaline release होगा sympathetic nerve ending से. तो noradrenaline will go and will activate the alpha 1 receptor of वेस्कुलर स्मूथ मसल, मतलब ब्लड वेसल के स्मूथ मसल में अल्फा 1 को एक्टिवेट करेगा. दैट विल इंक्रीज कॉजेज द वैसो कंस्ट्रिक्शन, दैट विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, राइट. नाउ एट द अनदर एंड, ये जो नॉरएड्रेनालिन है, इट विल गो इन हार्ट, विल एक्टिवेट द बीटा 1 रिसेप्टर, विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, है ना. एंड यू नो दैट कार्डियक आउटपुट एंड इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द ब्लड प्रेशर, राइट. तो ये अगर डिक्रीज हो गए तो, अगर इंक्रीज हो गए तो क्या? अगर baroreceptor स्टिमुलेट होगा, है ना, स्टिमुलेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, इनिबिशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर बाय baroreceptor, देन इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. यहाँ पे डिक्रीज द, यहाँ पे भी इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा, एसिटिलकोलिन रिलीज होके कार्डियक आउटपुट कम कर दिया, राइट. दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर इज मैनेज्ड. नाउ कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, यू नो, अगेन, तो whatever I told you, again same thing. So arterial blood pressure is a function of cardiac output and peripheral resistance. Blood pressure is controlled by two mechanisms, actually four. So main two: adrenergic nervous system. So acute changes in the blood pressure are counteracted or corrected by baroreceptor influenced by adrenergic nervous system. Then renin, angiotensin, aldosterone system जो है, that is a long term regulation of blood pressure, है ना. renin क्या है? It is a proteolytic enzyme. renin क्या है? proteolytic enzyme produced by kidney. Okay, in response to, कब क्या होगा, कब प्रोड्यूस होगा? डिक्रीज द रिनल परफ्यूजन. इफ देर इज अ डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू किडनी, देर इज अ रेनिन प्रोड्यूस्ड. डिक्रीज द सप्लाई ऑफ सोडियम टू द मैकुला डेंसा एरिया ऑफ योर किडनी, और इंक्रीज इन द adrenergic activity, or due to certain hormonal factors. Now what is renin? What will renin do? So there is a reaction between angiotensinogen. What is angiotensinogen? It is an inactive serum globulin, that result in the formation of angiotensin 1. Angiotensin 1 क्या है? Decapeptide, which on passing through lungs, देखो यार, angiotensin 1 is converted into 2 in the lungs. Angiotensin 1 converted into 2 in the lungs. What is angiotensin 2? Is a octapeptide by ACE, angiotensin converting enzyme. बाद में angiotensin 3 भी बनता है, जैसे ऊपर मैंने बोला है, 4 भी बनता है. एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, एंड विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर, एंड आल्सो स्टिमुलेट द अल्डोस्टेरोन. बाय स्टिमुलेटिंग द अल्डोस्टेरोन, इट विल increase the sodium water retention, blood volume, and cardiac output and blood pressure. Angiotensin second is converted into angiotensin 3, which is a heptapeptide, which is again important as angiotensin 3.
और किडनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द ब्लड प्रेशर, है ना, डूइंग सो बाय रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म। नाउ यू सी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, so activation of renin angiotensin aldosterone system, decrease the renal blood flow, renin secretion will be increased. Now decrease the renal blood flow, किडनी को ब्लड फ्लो कम गया है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। एंड रेनिन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड फ्लो रेनिन इज रिलीज, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट द अल्डोस्टेरोन, है ना। अल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम वाटर रिटेन हो गया तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंड एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इट विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। Now other important points, if there is a defect in the vascular nitric oxide, ब्लड प्रेशर के रीजन क्या क्या है, एक तो किडनी में कोई इशू है आपका, या फिर आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट ज़्यादा हो रहा है, ओवर एक्टिवेशन। थर्ड चीज है आपका ब्लड वेसल का इशू, ब्लड वेसल इज इलास्टिक इन नेचर, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी so there is again increase the blood pressure. Now other point क्या है, there is a deficient vascular synthesis of nitric oxide in the hypertensive subject, जिसको ब्लड प्रेशर है उसमें क्या है, उसमें EDRF कम होता है, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, एंडोथेलियल मतलब इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल, there is a definite deficiency of vascular synthesis of nitric oxide in the hypertensive patients. There is a positive correlation between the total sodium and blood pressure, मतलब ज़्यादा सोडियम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, ज़्यादा बॉडी में सॉल्ट हो गया है ना, डॉक्टर बोलते हैं ना सॉल्ट में खाओ, सो मोर सोडियम मोर ब्लड प्रेशर, व्हाई, बिकॉज सोडियम क्या करता है, सोडियम विल डिपोजिट एंड इन द ब्लड वेसल, तो ये ब्लड वेसल में जाके डिपोजिट होता है एंड कॉजेज द हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को हार्ड बनाता है, causes the hardening of blood vessel, that why blood pressure is increased, right? And there is a negative correlation between the total body potassium and hypertension, मतलब क्या, जैसे पोटेशियम लेवल कम हो गया, so if there is a decreased potassium level in the blood, that also increases the blood pressure, मतलब सोडियम लेवल बढ़ गया ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन पोटेशियम लेवल कम हो गया तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। In some patient essential hypertension is related with insulin resistant hyperinsulinemia, synthesis of abnormal steroid, है ना, तो अगर गलत हार्मोन बन गया तो भी होता है, तो हाइब्रिड बिटवीन कॉर्टिजोल एंड अल्डोस्टेरोन, the condition is known as a GRA, glucocorticoid remediable aldosteronism, ठीक है, तो that is one of the cause for blood pressure। अगेन यहाँ पे देखो नाउ, है ना, टारगेट्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, देखो टारगेट्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव, टारगेट्स क्या रहेंगे, आप क्या क्या कर सकते हो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, तो टारगेट्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप ब्लॉक कर सकते हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक करने के लिए भी बहुत सारी चीजें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे ब्लॉक करेंगे आप, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, जैसे यू कैन प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, you can prevent the storage of noradrenaline, you can deplete the storage, you can block the adrenergic receptor, you can block the ganglia, okay? Presynaptic neuron you can stimulate, so you can block the alpha receptor, beta receptor, all these are the drugs, है ना, then है ना, centrally you can you can decrease the outflow of sympathetic nervous system, or you can block the receptor, then second you can block the RAS के ऊपर जितने भी steps, you can block the RAS receptors, okay? You can decrease the blood volume so that blood pressure will decrease. How you can decrease the blood volume? By using diuretics, ठीक है, यहाँ पे diuretics होंगे, and blood vessel, okay? You can dilate the blood vessel, blood vessel कितने टाइप के होता है आपके, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, तो आर्टरी को डायलेट करो,
जो ड्रग आर्टरी को डायलेट करते हैं उसको आर्टेरियोलार डायलेटर बोलते हैं, जो वेन को डायलेट करते हैं उसको वेनो डायलेटर बोलते हैं, जो दोनों को डायलेट करते हैं वो भी होते हैं, है ना। मतलब दीज आर द टारगेट्स फॉर योर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसे ही क्लासेस में। तो यहाँ पे देखो, तो टारगेट क्या रहेंगे आपके, ब्लड टारगेट्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव, टारगेट्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो फर्स्ट सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, ब्रेन में आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करो, तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स ब्रेन में, ठीक है। देन पेरिफेरल मतलब ऑर्गन के ऊपर, तो यू कैन ब्लॉक द अल्फा रेसिप्टर बीटा रेसिप्टर, so beta blockers, है ना, you can block the alpha receptor, alpha blockers, ठीक है। so these three targets, then you can also block the ganglionic blockers, ठीक है, right, then you can also block the adrenergic neuron blockers, ये एक क्लास होगा आपका। now इसमें सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स एंड एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, ये ड्रग आएंगे। बाद में रिसेप्टर ब्लॉकर्स में अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, बाद में आएगा रास के ऊपर, रास सिस्टम, यू कैन ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ, है ना, यू कैन ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 बाय इनहिबिटिंग द रेनिन इनहिबिटर, you can block the conversion of 1 to 2 by inhibiting ACE inhibitors, you can block the actions of angiotensin second by inhibiting the receptor, so angiotensin receptor blockers, ये क्लास, ठीक है ना। देन अगेन वैसोडाइलेटर्स, है ना, वैसोडाइलेटर में क्या है कि दो वेसल्स होते हैं, आर्टरी एंड वेन। आर्ट्रियोलार डायलेटर में आता है पोटेशियम चैनल ओपनर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में फिर से 3 क्लास आता है, तो फिनाइल अल्कलामाइन डेरिवेटिव, डायबेंजोथाइजेपिन डेरिवेटिव एंड डायडोपेरिवेटिव। तो अपन देखेंगे ऑल क्लास विल सी, यू कैन सी ओवर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहला है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग मीन्स दे विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, है ना। फर्स्ट सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, है ना। इसका रोल क्या होता है, वाई सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, मैं बोलता हूँ आपको, पहले क्लास देते हैं। सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देन सिलेक्टिव इमिडाजोल रिसेप्टर स्टिमुलेंट नॉन एज मोक्सोनिडीन, इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देन सेकंड, है ना, इसमें सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में एक हो गया, सेकंड इसमें क्या रहेगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में आएगा आपका ट्राइमिथोफार्म एंड हेक्सामिथोनिन, ठीक है। थर्ड इसमें आएगा ड्रग एक्टिंग ऑन अ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, इसमें क्वानिथिडीन, बिथानिडीन, डेब्रिसोपिन एंड बेटिलियम टोसाइलेट, ठीक है, बेटिलियम टोसाइलेट। इसमें आपको रेजरपिन भी आता है, लेकिन रेजरपिन के लिए एक अलग क्लास है, तो कैटेकोलामाइन डिप्लीटर्स में आएगा आपको रेजरपिन, राइट। अगेन ड्रग एक्टिंग ऑन अ रिसेप्टर, सो अल्फा ब्लॉकर्स, एड्रेनर्जिक अल्फा ब्लॉकर्स, इसमें अगेन 2 क्लास है, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव में आता है पेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड टोलेजोलिन। प्राजोसिन इज अ सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉक, बीटा ब्लॉकर्स में आएगा आपको, है ना, यहाँ पे भी 5 क्लास आते हैं, है ना। बीटा ब्लॉकर में 5 क्लासेस आ रहे हैं, डिस्कस इट। बीटा ब्लॉकर के सब लॉल एग्जांपल्स है, मेटोप्रोलॉल, लैट्रिनोल, प्रोप्रानोल, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लेवेटोल। नाउ वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाले, ड्रग कौन से है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल, है ना। आर्टरी होता है, सो आर्टियोलार वैसोडाइलेटर, इसमें आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें 3 क्लास आता है, इन हाइड्रोलाइजिन, डाइऑक्साइड एंड मिनाक्सोडिल, दे आर नोन एज पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तीनों हाइड्रोलाइजिन, डाइऑक्साइड एंड मिनाक्सोडिल, दे आर द पोटेशियम चैनल ओपनर। आउट ऑफ दैट मिनाक्सोडिल इज यूज्ड इन द एलोपेसिया, टकला हो गए आप तो इसमें एलोपेसिया में ड्रग यूज करते हैं। इन आर्टेरियो वेनुलर डायलेटर, दोनों को डायलेट करेंगे, सोडियम नाइट्रोफोसाइड। वेनोडाइलेटर को नहीं, वेनोडाइलेटर में आएगा आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है आपको वेरापेमिल, डिटियाजेम, लिपिडेपिन, अम्लोडेपिन,
ये एक अलग सी क्लास है। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर में आता है डाइसोक्साइड मोनोक्साइड पिनासाइड निकोराइड। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास, ड्रग एक्टिंग ऑन रास, इसमें देखो रेनिन इनिबिटर, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। रेनिन इनिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स आर आल्सो रेनिन एंटागोनिस्ट, देन एलिकाइरेसिन एंड कैलकाइरेसिन, एलिकाइरेन, कैलिकाइरेन, रैमिकाइरेन, इसमें 3 4 ड्रग आता है। एलिकाइरेन है ना, एलिकाइरेन, रैमिकाइरेन एंड, है ना, एलिकाइरेन, रैमिकाइरेन, कैलिकाइरेन, 3 ड्रग आता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, आएगा आपको फिर से। नाउ एस इनिबिटर्स, एस इनिबिटर मतलब क्या, दे विल प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2। तो इसमें सब क्या आता है, प्रिल, कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्यूराप्रिल, रैमिप्रिल। एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर, इसमें आता है सब सर्टान्स, लोसर्टान, टेलमिसर्टान, इब्रासर्टान, वालसर्टान। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आता है स्पाइरोलेक्टोन, इप्रिलेनोन, इप्रिलेनोन। डायरेटिक्स में इसमें बहुत सारे क्लास आते हैं, 7 8 ना। मिसलेनियस में डायरेटिक्स, ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। अभी दूसरा देखो, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू सी। तो देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स मतलब क्या, दीज ड्रग विल डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो डायूरेटिक्स में यहाँ पे 3 ही क्लास दिए है, बिकॉज ये मोस्टली यूज करते हैं, बट देर आर डिफरेंट क्लास। तो थायजाइड डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, इसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडोपामाइड, जिपामाइड, these are the drug. Hydrochlorothiazide, chlorthalidone, indapamide, zipamide. So these are the diuretics known as the thiazide diuretics. But this chlorthalidone and indapamide, they are not exactly thiazide diuretics. They are known as thiazide-like diuretics. In high-sealing diuretics or loop diuretics, इसको loop diuretic बोलते हैं। Example is furosemide, torsemide, bumetanide. पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में आता है स्पाइरोलेक्टोन, इप्रिलेनोन, अमीलोराइड। ड्रग दैट इनहिबिट द रास सिस्टम, इसमें देखो ड्रग एक्टिंग ऑन रास, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है ना, एलिस्काइरेन है ना, देन एलिस्काइरेन एंड रैमिस्काइरेन, एलिस्काइरेन, एलिस्काइरेन, रैमिस्काइरेन। देन एस इनिबिटर्स, एस इनिबिटर में सब प्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लिसोनोप्रिल, पेरेंटोप्रिल, रैमिप्रिल, फोसिनोप्रिल, इनाप्रिल। प्रिल वाले क्या है कि एस इनिबिटर है, प्रिल, प्रिल जिसके सफिक्स में आएगा, दे आर द एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनिबिटर। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, 81 ब्लॉकर, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुके हैं बहुत बार। सर्टान्स, इस है ना, सर्टान, लो सर्टान, कैंडी सर्टान, वाल सर्टान, टेलमी सर्टान, एब्रा सर्टान, ओलमे सर्टान। तो ये सर्टान्स क्या है, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। मतलब क्या है 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, क्यों, बिकॉज एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एस, बट एंजियोटेंसिन 2 act on its receptor, angiotensin 1 receptor, angiotensin 2 receptor, so block that receptor, right? Now drug acting on a sympathetic system, इसमें देखो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एग्जांपल इज क्लोनिडीन मिथाइल डोपा, इसके डिटेल में देखेंगे अपन बाद में। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसमें सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव 2 क्लास है, वो देखेंगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल this pentolamine, phenoxybenzamine and tolazolone. Pentolamine, phenoxybenzamine, tolazolone, they are the non-selective, whereas prazosin, terazosin, dozosin, they are the selective, है ना। क्योंकि अल्फा रिसेप्टर क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 2 रिसेप्टर होते हैं। सिलेक्टिव मतलब, नॉन सिलेक्टिव मतलब दोनों को ब्लॉक करेंगे, सिलेक्टिव मतलब सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे, तो नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव। देन बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स में 5 क्लासेस है, विल सी सेपरेटली, डोंट वरी। तो बीटा ब्लॉकर्स प्रोप्रानोल, मेटोप्रोल एंड अदर। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, कार्बेडाइलोल एंड लेपिडोल। ये फिर से अपन ये पूरा बीटा ब्लॉकर का अलग क्लास है, वो देखेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन सेकंड है ना। उसके बाद में क्या है कि वैसोडाइलेटर्स, ये है सबका आपका क्या है, ड्रग एक्टिंग होना ब्लड वेसल्स। तो बोथ आर द वैसोडाइलेटर्स, so both are the vasodilators. First, calcium channel blocker, so they will block the L type of calcium channel
है ना, prevent the entry of calcium in the inside the cell of blood vessel and prevent the contraction of blood vessel. तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 3 आता है, फिनाइल अल्कलामाइन डेरिवेटिव, एग्जांपल इज वेरेपामिल, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, वेरेपामिल इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड क्लास आता है बेंजोथायाजेपिन, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, डेल्टियाजेम, एग्जांपल इज डेल्टियाजेम। थर्ड इज नथिंग बट द डाइहाइड्रोपिरिमिडिन्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें सब डेपिन्स आएंगे, नेपेडेपिन, फेलोडेपिन, अम्लोडेपिन, नाइट्राडेपिन, लूसीडेपिन, है ना, लेकार्निडेपिन एंड बेनिडेपिन, ये सब डेपिन्स क्या है, डेपिन्स डाइहाइड्रोपिरिमिडिन्स। देन वैसोडाइलेटर में आएगा, है ना, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देमसेल्फ एक्ट एज वैसोडाइलेटर, तो यहाँ पे क्लास अलग दिया है। नाउ आर्टेरियोलर डायलेटर में आता है हाइड्रोलाइजिन, मिनोक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, और इसमें ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आता है। आर्टेरियोलर प्लस वेनोडाइलेटर, सोडियम नाइट्रोक्साइड, तो इसमें सिर्फ वेनोडाइलेटर भी आता है, वेनोडाइलेटर सिर्फ वेन को डायलेट करेगा। इसमें आता है आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। सी ओवर हियर नाउ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉक, है ना, एड्रेनर्जिक, है ना, सो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, है ना। तो मैं आपको एक बाद में क्लासिफिकेशन इसका बोलता हूँ कैसे क्लास करना है, अलग ही टाइप बनाए हैं। सो यहाँ पे देखो, हाउ यू कैन प्रिवेंट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन, बिकॉज you know that there is a overactivation of sympathetic nervous system that leads to hypertension. देखो, in the brain, ये है brain, in the brain and spinal cord, दोनों में भी न्यूरॉन में क्या होता है, there is a synthesis, storage, release of noradrenaline. Now remember, noradrenaline, है ना, dopamine, they are synthesized. We have seen in the एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, अपन ने देखा है एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में, तो नॉर एड्रेनालिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन का कन्वर्जन क्या होता है, टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, एंड डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन, डोपामाइन बिकॉज ऑफ द, है ना, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, एंड डोपामाइन इज कन्वर्टेड इनटू नॉर एड्रेनालिन, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, राइट। नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन इज स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल, यहाँ पे डोपामाइन क्या होगा, स्टोर होगा वेसिकल में, तो वेसिकल में डोपामाइन का कन्वर्जन नॉर एड्रेनालिन होता है, बाद में यहाँ से नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है अपॉन सिग्नल, है ना। दिस इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, तो ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दिस वन इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। नॉर एड्रेनालिन विल बी रिलीज, और रिलीज द नॉर एड्रेनालिन विल एक्ट ऑन अ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, कौन सा है, अल्फा एंड बीटा। Now remember this release is also controlled by this alpha 2 receptor, ये जो रिलीज है ये कंट्रोल करने का काम किसका है, अल्फा 2 रिसेप्टर, so it will decrease the release of noradrenaline. Remember, now this is how noradrenaline is synthesized, stored and released, ठीक है ना। तो सिंथेसिस कैसे होता है, टायरोसिन से डोपा, डोपासु, डोपा से डोपा, डोपा से डोपामाइन, डोपामाइन स्टोर होता है सिनेप्टिक वेसिकल में, वेसिकल में नॉरएड्रेनालिन बनता है, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होता है, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, ये सब ब्रेन में ही चल रहा है, ऑर्गन के ऊपर नहीं, राइट। नाउ हाउ यू कैन प्रिवेंट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज, ओके, दीज आर द टारगेट्स, ओके। नाउ रिमेंबर, you can also prevent the synthesis of dopa by using a false neurotransmitter that is known as a metyrosine. Metyrosine is a false neurotransmitter, so that is used, that will block the conversion of tyrosine to dopa, metyrosine, okay. Now so dopamine is stored in the synaptic vesicle, so you can deplete, यहाँ से हकाल देंगे उसको, तो कैसे हकालेंगे, so catecholamines are depleted from their storage site by the Raoul P alkaloids. तो reserpine जो है आपका, reserpine is known as a catecholamine depleter, तो catecholamine depleter will deplete, will हकाल, है ना, ये हकाल देगा या storage binding sites, storage sites, then okay, then ये जो सिंथेसिस का कार्यक्रम चल रहा है,
ये न्यूरॉन में चल रहा है, कौन सा न्यूरॉन है ये, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक करो, यू कैन ब्लॉक द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन बाय यूजिंग गोनिथिडीन, गोनिथिडीन, डेब्रिसोक्विन, ब्रेटिलियम टोसलेट, है ना, गोनिथिडीन, डेब्रिसोक्विन एंड ब्रेटिलियम टोसलेट, डेब्रिसोक्विन, ब्रेटिलियम टोसलेट, दे आर द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, गोनिथिडीन, ब्रेटिलियम टोसलेट and debrisoquine, they are the adrenergic neuron blocker. Metyrosine is a false neurotransmitter, reserpine is a catecholamine depleter, ठीक है। Now if you cannot prevent the synthesis, you can deplete. If you cannot deplete, you can block the adrenergic neuron. If you can't block the adrenergic neuron, you can control the release of noradrenaline. How? यहाँ पे देखो, सेंट्रल अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है, दैट विल कंट्रोल द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ये रिलीज कम करता है, तो इसको स्टिमुलेट करो। सो सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, so they decreases the sympathetic outflow. If you cannot prevent synthesis, storage, release, you cannot control the release, you cannot block the if you are not able to block the adrenergic neuron, then क्या करना है, so then noradrenaline will be released, it will act on the its receptor, post synaptic receptor, so you can block the post synaptic receptor, central receptor block करो, है ना, alpha blockers will block the alpha receptor, beta blockers will block the beta receptor in the central. अगर ये सब नहीं कर सकते, you can block the ganglia, this is the ganglia, so ganglionic blocker, trimethoprim and hexamethonium. So this is nothing but the centrally acting drug. एंटी हाइपरटेंसिव में क्लासिफिकेशन में पहला आपका क्लास है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, है ना, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, उसमें क्या है, उसमें देखो कितना क्लास हो गया आपका, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, उसमें पहला तो फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर इज अ मेटायरोसिन, एग्जांपल इज अ मेटायरोसिन, ये क्लास हो गया। तो कैटेकोलामाइन डिप्लीटर सेकंड क्लास हो गया, है ना। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर थर्ड क्लास, गोनिथिडीन, ब्रेटिलियम टोसलेट एंड डेब्रिसोक्विन, है ना, थर्ड क्लास। मेजर पहला क्लास कौन सा है आपका, ड्रग एक्टिंग ऑन मतलब सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक, है ना, मेजर जैसे क्लास ए लिख दिया आपने यहाँ पे, ए सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, उसमें पहला है पहला कौन सा है आपका, फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर मेटायरोसिन, सेकंड है आपका कैटेकोलामाइन डिप्लीटर रेजरपिन, थर्ड है आपका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर गोनिथिडीन, डेब्रिसोक्विन, ब्रेटिलियम टोसलेट, फोर्थ क्लास है आपका सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, फोर्थ क्लास क्या होगा आपका, सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, फोर्थ क्लास है ना, फोर्थ क्लास है आपका सेंट्रल अल्फा 2 स्टिमुलेंट, है ना, ये इसमें क्या है, क्लोनिडीन मिथाइल डोपा, है ना। फिफ्थ क्लास है आपका, है ना, फिफ्थ क्लास है इसमें आपका, फिफ्थ क्लास कौन सा है इसमें, है ना, फिफ्थ क्लास है ना, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, सो ट्राइमिथोफार्म एंड हेक्सामेथोनियम, फिफ्थ क्लास, है ना। सिक्स क्लास कौन सा है आपका, सेंट्रल अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, सिक्स क्लास, है ना, ये सिक्स क्लास, सेंट्रल अल्फा ब्लॉकर, सेंट्रल बीटा ब्लॉकर, है ना, ये सिक्स, मतलब ड्रग, है ना, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, पहला मेजर क्लास, और इसमें कितने क्लासेस है, सिक्स क्लासेस है, या फिर सेवन क्लासेस, सेवन भी कर सकते हो आप इसको। So in the centrally acting antihypertensive drug you have 7 classes or 6 classes, तो ये 6 क्लासेस तो यही पे हो गए, ठीक है। नाउ दूसरा मेजर क्लास कौन सा आएगा आपका, इसके बाद में दूसरा मेजर क्लास आएगा आपका एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है मतलब अल्फा बीटा ब्लॉकर वो आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा ब्लॉकर आएगा, अल्फा बीटा ब्लॉकर, अल्फा को ब्लॉक करो, बीटा को ब्लॉक, अल्फा में नॉन सिलेक्टिव बीटा अल्फा ब्लॉकर एंड सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, है ना, बीटा ब्लॉकर में नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव, उसके बाद में फिर से बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर विद वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकर, मतलब उसमें भी 4-5 क्लास है, वो भी क्लासेस है, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो अपन अभी ये ड्रग इंडिविजुअल में देखेंगे, बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, so first drug is a clonidine, I hope you are getting, समझ रहा है ऐसा होप है, so I am expecting that you are getting my points. So clonidine
Clonidine is a centrally acting antihypertensive, potent antihypertensive. It is a potent antihypertensive. Imidazoline derivative है, act as a central alpha 2 agonist and a presynaptic adrenergic receptor. And activation of this receptor will decrease the sympathetic outflow and will decrease the sympathetic outflow and decrease the blood pressure. So activation of this causes a decrease in the release of noradrenaline and decrease in the blood pressure. It reduces the plasma renin activity. It reduces the plasma renin activity. तो रेनिन का एक्टिविटी भी कम करता है, राइट. क्लोनिडीन एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? तो एज इट डिक्रीजेस द, देखो, एज इट डिक्रीजेस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो भी ड्रग सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. दिस ड्रग दे विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड दैट्स व्हाई इट मींस दे विल इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. It means they will decrease the parasympathetic activity. तो जो ड्रग सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर रहा है वो अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रहा है. दैट्स व्हाई यू विल हैव एडवर्स इफेक्ट लाइक ड्राउजीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वर्टिगो, कॉन्स्टिपेशन, है ना, डिफिकल्टी इन द मिक्चुरेशन, पैराथायराइड पेन, इम्पोर्टेंस, है ना, जीआईटी डिस्टर्बेंस. रिमेंबर, इनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है रिबाउंड, राइज इन द ब्लड प्रेशर आफ्टर सडन स्टॉपेज, और है ना, सडन स्टॉप किया तो रिबाउंड हाइपरटेंशन करता है. इसका यूज क्या है? थेरापेटिक यूजेस क्या है इसके? इन कॉम्बिनेशन विद द डायरेटिक इट इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस, मतलब आफ्टर 35 लेडीज में जो हॉट फ्लश होता है, टू कंट्रोल द सिम्टम्स आफ्टर द ओपिएट पॉइजनिंग, इसके सिम्टम्स, टू कंट्रोल द ओपिएट एंड अल्कोहल, निकोटीन, विड्रॉल में यूज करता है. इन द चीज रिएक्शन, it is also used in the diagnosis of growth hormone deficiency. तो क्लोनिडीन उसका ही सिमिलर ड्रग है, गुआनफेसिन, सिमिलर एक्शन टू क्लोनिडीन, ओनली लॉन्ग एक्टिंग. ये वो है एक ड्रग. दूसरा आएगा आपका अल्फा मिथाइल डोपा. सेकंड ड्रग इज अल्फा मिथाइल डोपा. एक्चुअली इट इज अ प्रोड्रग, है ना. अल्फा मिथाइल डोपा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन. रिमेंबर, अल्फा मिथाइल डोपा is a prodrug converted into alpha methyl noradrenaline. Isomer of methyl dopa has a structural similarity with the dopa, metabolized by metabolized to the alpha methyl noradrenaline in the neuron, which act centrally by activating the alpha 2 receptor. ये भी alpha 2 receptor stimulant है in the vasomotor center. It also inhibits the renin release from kidney. और सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा रहा है. एडवर्स इफेक्ट वही होंगे. तो इट प्रोड्यूसेस द हाइपरटेंशन आफ्टर पीरियड ऑफ 3 to 6 आवर, मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट होता है. रिबाउंड, हाइपरटेंशन, सबका एडवर्स इफेक्ट. रिडक्शन इन द कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सेडेशन इज एडवर्स इफेक्ट. जो भी सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट होगा सेडेशन, हेडेक, फटीग, है ना. सेंट्रल सीएनएस में डिमिनिश्ड इंटेलेक्चुअल ड्राइव, मतलब आपको सोचने की कैपेसिटी कम कर देगा. ड्राउजीनेस, फॉरगेटफुलनेस, नाइटमेयर्स, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, गायनेकोमेस्टिया, मेंटल डिप्रेशन, पार्किंसनिज्म, जीआईटी अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, फेलियर टू इजैकुलेट, आर्थराल्जिया एंड स्किन रैश. ये इसके एडवर्स इफेक्ट है ना. टॉलरेंस टू द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना, is there. It can produce fever accompanied by alteration in the liver function test. Cholestatic jaundice may occur. You know, it produces direct antibody test. It gives positive comb test. इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. Which antihypertensive drug gives positive comb test? So alpha methyl dopa. ठीक है. तो alpha methyl dopa के एक्शन देखो. Alpha methyl dopa is metabolized to methyl noradrenaline, stimulate the alpha 2 receptor in the vasomotor center, so that results in the decreased sympathetic drive, which causes the vasodilation and decrease the heart rate, so ultimately decrease in the blood pressure. So remaining part we'll see tomorrow. कल अपन बाकी remaining part देखेंगे.
अभी बोलने की कैपेसिटी मेरी भी खत्म। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे। अगर समझ में आया होगा तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो। कल देखेंगे, बाद में गैंग्लियन ब्लॉकर्स वगैरह वो अल्फा बीटा का क्लासिफिकेशन सब देखेंगे। तो सी यू टुमारो।